Good morning, my dear students and my dear friend. This is Sudhir and I welcome you all on today's class. And today we are going to discuss about an amazing and interesting topic, that is how to find out the difference between the two numbers. Then we will find how to find the number which is more than or less than. Then what should be added to a particular number to get a resultant answer. Okay. All the questions are available on page number 39, exercise 2.5. Okay. So let us solve the questions now. So now this is the question number B from exercise 2.5. What is the difference between? That means what? We have to find out the difference between the two numbers. ठीक है, कोई भी हमारे पास दो नंबर है, उन दो नंबर्स का क्या निकालना है, हम लोगों को डिफरेंस फाइंड आउट करना है. ठीक है. नाउ डिफरेंस किसको बोलेंगे? डिफरेंस मीन्स व्हाट? डिफरेंस मीन्स इट इज अ रिजल्टेंट ऑफ सब्सट्रैक्शन. दैट मीन्स जो सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमारा आंसर आता है, दैट इज कॉल्ड एज द डिफरेंस. ठीक है. सो नाउ हियर लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, 7853 एंड 2867. Okay, so now here this is the first question. We have to find out the difference between the 7853 and 2867. This one, first one. ठीक है. So if you want to find out a difference between the two numbers, so we have to subtract. ठीक है, हम लोगों को क्या करना है? सब्सट्रैक्शन करना है. अब सब्सट्रैक्शन करते वक्त हम लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना है कि बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट होगा, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर सब्सट्रैक्ट नहीं होगा. ओके, दैट मीन्स व्हाट? वी कैन सब्सट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द बिगेस्ट नंबर. ओके, सो नाउ लुक एट दिस 7853, दैट इज 7853 and 2867. These are two given numbers. Now we have to find out a difference between these two numbers. So again we have to understand which number is greater and which number is smaller. ठीक है, क्योंकि हम लोग छोटे नंबर्स में से बड़े नंबर को तो सब्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे. सो हियर द 7853 इज अ ग्रेटर नंबर, ये बड़ा नंबर है. ठीक है. सो आई विल राइट 7853 एंड देन 2867. नाउ वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दिस टू नंबर्स. अब डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो हम लोग सब्सट्रैक्शन का साइन लगा देंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करेंगे. ओके, so let us see how to subtract these numbers. Now we have to start subtracting from which side? This side. Okay, 1, 10, 100 and then 1000. हम लोग ऐसे सब्सट्रैक्शन करेंगे. So 3 minus 7, it is not possible. So what we have to do? We will take a borrow from nearest place. Okay, so this 5 becomes 4 and this 3 becomes 13. Okay, now we can subtract 7 from 13. So what will be the answer? Yes, it will be okay. Now it is 6. Now we have to subtract the digit at the tens place. So 4 minus 6, again not possible. So we have to take a borrow from the nearest number. So this 8 becomes 7 and this 8 is given 100. 100 है ना, 8 times 100 is there, so it will give 1 times 100 to the 10. ठीक है. अब जब वो 100 जाएगा तो वो 10 से इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वी नो दैट 100 में कितने टेंस होते हैं? 10 times 10 होता है. ठीक है. एंड दैट्स व्हाई दिस 4 विल इंक्रीज बाय 10, दैट मीन्स इट विल बी 14. अब वो क्या बन जाएगा? 14 बन जाएगा. नाउ वी कैन सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम दी 14. ओके, सो वी विल गेट 8. Understood everyone? Okay. Now 7 minus 8, again not possible. Take borrow from the nearest place. This becomes 6 and this becomes 17. And 17 minus 8 is 7 is here and 2 is here. 7, 8, 9. Okay. So here will be 9. Okay. 6 minus 2 gives us 4. 4, 9, 8, 6. So that is the difference between these two numbers. Understand? Okay. Let's take up one more question. This is 14071 and 73408. That means 14,071. Okay. And 73,408. Now we have to find the difference between these two numbers. ठीक है. अभी हम लोगों को इन दोनों नंबर्स के बीच का क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंस फाइंड आउट करना है. अब डिफरेंस तो फाइंड आउट करना है, लेकिन हम लोगों को क्या पता है कि वी कैन सब्ट्रैक्ट स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम बिगर नंबर. बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट हो सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let's think which number is greater.
So here 73,408, this one and this one both are 5-digit numbers. ठीक है, दोनों से दोनों 5-digit numbers है, and we have learned that if the number have more number of digits that should be greater. But यहाँ तो दोनों नंबर सेम ही है, यानी कि सेम नंबर ऑफ डिजिट्स है. तो अब हम लोगों को क्या देखना पड़ेगा, प्लेसेस देखने पड़ेंगी. ठीक है. सो एट द हाईएस्ट प्लेस देयर इज 1 एंड हियर एट द हाईएस्ट प्लेस देयर इज 7. सो ऑब्वियसली हमारा ये वाला नंबर क्या है, बड़ा है. दैट मीन्स 73,408 इज द greatest one, and that's why I will subtract this number from this one. So I will write big number at the upper side, okay, and subtract 1407. Now we have to subtract these numbers. So this is your 1, 10, 100, 1000 and the 10,000. Okay, so 8 minus 7 gives us 7. Okay, 0 minus 7, not possible, take a borrow. This 4 becomes 3 and this 0 becomes 10. Okay, 10 minus 7 gives us 3. Okay, 3 minus 0, 3. 3 minus 4, again not possible, take borrow. This becomes 6 and this 3 becomes 13. Okay, 13 minus 4, this becomes 9. Okay, 6 minus 1 gives us 5. Understood everyone? So that is the answer. Okay? Okay, that is correct. Now I will take a fifth one. Fifth question में ले रहा हूँ, ठीक है? Fifth question I want to take and that is 4444. 4444 and which number it is? 5000. Now look here. We have to find the difference between these two numbers. Okay? We have to find the difference between these two numbers. Which one? 4,444 and 5,000. Okay. So here 5,000 is the greatest number and 4,444 is the smallest number. So here we will subtract this number from 5,000. ठीक है, हम लोग इसमें इसको क्या करेंगे, इसमें से subtract कर देंगे. ठीक है. पर सब्सट्रैक्शन करते वक्त हम लोगों को ध्यान रखना है 5000 इज अ नंबर विच कंसिस्ट ऑफ 0 एट द लास्ट. उसमें बहुत सारे जीरो है. कहाँ पर? पीछे के साइड में, राइट हैंड साइड की तरफ है. ठीक है. सो राइट 500044 and the 4 and with the sign of subtraction. Okay. Now here we have to subtract 0 minus 4 not possible. Take borrow from nearest place. वहाँ पर भी 0 ही है, बाद में से फिर से 0 ही है. So here what we have to do? We have to take a borrow from this 5. ठीक है. Now this 5 will not give borrow directly to this one. That means this is your 1, 10, 100 and the 1000 place. So the 5000 will not give borrow to the 1 place. ये direct यहाँ पर borrow नहीं दे सकता है. ठीक है. So we will take borrow here. This 5 becomes 4 and this 1 will transfer to the 100 place. अब 1000 में, जब 1000 में कितने 100 होते हैं? देखो, this is 1000, here is 5000. ठीक है. इस 5000 में से 1 times 1000 कहाँ चला गया? 100 प्लेस पे चला गया. ये 5 है, मतलब यहाँ पर 5000 है. ठीक है. इट इज 5000. सो इट विल गिव 1 times 1000 to the 100. ठीक है. बट वी नो दैट कि 1000 में 10 times 100 होता है एंड दैट्स वाई it will increase directly by 10. So this becomes 10 times 100. Okay. अब यहाँ 10 times 100 आ गया. Now we can give the borrow to the 10th place. अब ये इसको दे सकता है. ठीक है. Now this 10 becomes 9. This becomes 10. Same concept है. This 10 becomes 9 and this becomes 10. Now it will 10. It becomes 10. Okay. Because it is this one place is not giving any borrow to the nearest number. ये borrow नहीं दे रहा, इसलिए 10 ही रहेगा. ठीक है. Now 10 minus 4 gives us 6. 9 is here. There is not 10. Okay, because we have taken borrow from the 10s to 1's place. So 9 minus 4 gives us 5. 9 minus 4 gives us 5. And here is 4 is remaining because we have given the borrow to the 100 place, and that is 4 minus 4 gives us 0. Understood? So I hope you understand how to find the difference between the two numbers. It is very, very easy.
Just take two numbers and first of all think about which number is greater and which number is smaller. ठीक है, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है पहले देख लो अच्छे से. ठीक है, then we will subtract the smallest number from the biggest number and then we will get the difference between that two numbers. Understood everyone? So quickly note down in your notebook these questions and rest of the question, that means question 2, 3, 4 and 6. No, 2 is completed. 3, 4 and 6 is your homework. I hope you have solved. ठीक है, so quickly check and note down in your notebook. Then we will proceed toward the question number C. Find the number which is. ठीक है, so quickly note. Okay students, so let's solve the question number C, which is available on page number 39, and the question number C is find the number which is. Okay, so in this question there are two types of questions. The first question have the concept of more than. ठीक है, more than की concept है, and the second one is the less than. Okay, less की concept है and the first one is the more than concept. So in these two topics, that means in these two concepts, first of all we have to understand what we have to do in this type of questions. Okay, so look everyone here, the first question is 563 more than 8978. Okay, जब भी हमारा कॉन्सेप्ट आता है more than, what is the meaning of more? More का मतलब होता है ज्यादा, है ना, ज्यादा होना, that means increase होना. So when the answer is increasing, when your answer will be increased, okay, आपका आंसर कब बड़ा होते जाएगा, कब होगा, जब आप एडिशन करोगे. ठीक है, that means in the concept of more than we have to add. more का मतलब होता है ज्यादा, और ज्यादा हमारा आंसर कब आएगा, जब भी हम लोग एडिशन करेंगे. ओके, एंड इन द लेस देन वी हैव टू सब्सट्रैक्ट. अंडरस्टूड? लेस मतलब होता है कम, और हमारा आंसर रिड्यूस कब होगा, कम कब होगा, जब हम लोग किसी नंबर को, पर्टिकुलर नंबर को किसी पर्टिकुलर नंबर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे. ओके, when you are doing the subtraction, the difference will be less of these two numbers, and when you are adding the particular that two numbers, you will get the number which is more than that both the numbers. Okay, so let's see the question, that is 563 more than 8978. so more than में हम लोगों को क्या करना है, एडिशन करना है. ओके, एंड डोंट फॉरगेट टू रीग्रुप इफ देयर इज नेसेसरी. अगर कहाँ पर रीग्रुप करने की जरूरत है तो वी विल रीग्रुप. ओके, so write down the number. First of all we will write the big number 8978. It is not necessary to you have to write this number only, you can write any one, because we have learned we can add the numbers in any order. हम लोग किसी भी नंबर को कैसे भी ऐड कर सकते हैं. our answer will not affected in the addition. Okay, plus 563. Can I write 563 here? You will write 3 here, 6 here and 5 will be here. Write down properly according to the places, 1, 10, 100 and the 1000. Okay, so now we have to add 8 plus 3 gives us 11, and that's why I will write 1. 1 will carry forward to the 10th place. 7 plus 6 plus 1 gives us 14, and that's why I will write 4 over here and 1 will be forward. 9 plus 1 is 10, 10 plus 5 gives us 15, so I will write 5 over here. Again 1 will be carried forward to the 1000 place. That is the final answer. Understood? Let's see the question number second is question number second. Okay, in the question number second there is a concept of more than, that means question number second में आपको addition करना है. And the question number 3 have the concept of less than, and that's why we have to subtract in question number 3. I am taking the question number 4 directly. Question 2 and question 3 you have to solve. Okay, so let's see the fourth one, the concept of less than. And in the concept of less than, what we have to do? We have to subtract. Okay, but in the subtraction first of all we have to understand which number is greater. बड़े में से छोटा नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे. अगर हम लोगों ने उल्टा लिख दिया तो हमारा आंसर आएगा ही नहीं. ओके, so first of all we have two numbers 10113 and 3715. So I think this number is smaller, so I will write that number first. 10113 3715 3715. सही है क्या? It is not correct. So first, when you are subtracting the numbers, always write according to the places. This 3 is the 1000 place,
3000 प्लेस में रहना चाहिए. 3715. 3715. Now it is correct. So let's subtract. 3 minus 5, not possible. Take a borrow. This 1 becomes 0. This 3 becomes 13. Okay. Now here 13 minus 5 gives us, okay, 5 is remaining over here and this 3. That is 8. Then 0 minus 1, again not possible. Take borrow. This 0, this becomes 10. अब 10 प्लेस पे क्या आ गया? 10 आ गया. 10 minus 1 gives us 9. Okay, here is 0. 0 minus 7, again not possible. Take a borrow from here. वहाँ पर भी 0 है. अब जब भी बीच में 0 आ गया तो what we will do? We will take a borrow from the next to the next. उसके बाजू वाले के भी बाजू वाले से ले लेंगे. ठीक है. So this becomes 0. This becomes 10. अब 10 आ गया. Now this 10 can give to the nearest number. So this 10 becomes 9 and this 0 becomes 10. यहाँ 9 मत लिखना. ठीक है. क्यों? क्योंकि अब ये बोरो नहीं दे रहा है. जब तक कोई नंबर किसी को बोरो नहीं देता, it will not reduce. Okay. When you are giving borrow to the nearest number, then only it will reduces by 1, and the number which is getting borrow, it will increase by 10. Okay. Okay. Now, so 10 minus 7. ये यहाँ बोरो नहीं दे रहा है भी. That's why it will come 10. ठीक है. 9 नहीं करना. So 10 minus 7 gives us 3. 9 minus 3 gives us 6, and 0 will be as it is. So there is no, that is meaningless. If we are writing 0 over here, अगर आप 0 स्टड लिखते हो तो there is meaningless. Okay. So there is no need to write 0 over here. That is your answer. Understood everyone? Okay. Quickly note down. Okay students, so let's solve the question number D, but before solving the question we have to understand. Okay, what is the question number D? Question number D is what should be added to. ठीक है, what should be added to. So let's first of all understand, only we have to understand the first question. ठीक है, सिर्फ समझना है, उसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे सॉल्व करने का. ठीक है. When you are finding the solution of any particular question, first of all read the question 2 or 3 times, so that you will understand what is given, what we have to find out, and then how can we find out the answers. Okay, so look here, that is the first question. What should be added to? ठीक है, 1672 to get 3400. ठीक है, 1672 में क्या ऐड करेंगे? What we should add in this number? इस नंबर में कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो 3400 आएगा. That means what? Let's understand the simple question that we have learned in first standard. शायद first standard में हमने पढ़ा था. ठीक है, like that. 2 plus something is equal to 5. ऐसा क्वेश्चन था हमारे फर्स्ट स्टैंडर्ड या सेकंड स्टैंडर्ड में, है ना. Here there is a question. What is the question? Here is 2. ठीक है, हमारे पास 2 जो है वो ऑलरेडी वी हैव 2 एंड वी हैव टू ऐड समथिंग इन दिस बॉक्स. 2 तो हमारे पास में है. अब हम लोगों को क्या करना है? इस बॉक्स में कोई तो भी ऐसा नंबर ऐड करना है सो दैट द आंसर बिकम 5. उनका एडिशन 5 हो जाना चाहिए, यानी कि उनका सम क्या निकलना चाहिए? 5 आना चाहिए. सो आंसर कितना आएगा? ऑब्वियसली आई नो दैट कि आपको आंसर आ चुका है, बट कैसे आया? How can we find the answer? In this case, if there is a missing, ध्यान से देखो. ठीक है, if there is a box plus 2 is equal to 5. Both the questions are same, but the box is shifted here and the 2 is shifted here. Okay. In this case, in this case the number is missing, है ना. यहाँ का जो नंबर है वो क्या है? Missing है. And in this case, what we have to do? We will subtract the smallest number from bigger number. Simple है. 2 plus something is equal to 5. 2 में क्या प्लस करोगे तो 5 आएगा? Obviously answer is 3. Answer is 3. But how the answer is 3? Answer 3 आया कहाँ से? We will subtract this 2 from 5. 5 is here, so take out 5 fingers. So that is 5.
नाउ वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 2, 5 में से क्या करेंगे, 2 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, देन वी गेट द मिसिंग नंबर। अंडरस्टूड। अगर एडिशन में कोई मिसिंग नंबर है तो वहां पर उल्टा करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, उसका रिवर्स करेंगे, सब्सट्रैक्शन कर देंगे। एंड व्हाट इज द सब्सट्रैक्शन? सब्सट्रैक्शन इज द प्रोसीजर टू रिमूव द नंबर। रिमूव यानी क्या करना, वहां से हटा देना है, ठीक है। सो 5 इज हियर, वी हैव 5, ओके, वी हैव द 5 एंड वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 2। अब मैं 2 वहां से क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा। सो आई विल रिमूव दिस 2 फिंगर्स एंड द रिमेनिंग इज 3। सो द आंसर इज 3। सिमिलरली हियर द नंबर इज बिगर, यहाँ पे थोड़ा सा नंबर जो है वो बड़ा हो गया है, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम, ठीक है, कॉन्सेप्ट जो है वो क्या है, सेम है। हाउ? लेट्स हैव अ लुक हियर, वी कैन राइट 1672 प्लस something is equal to 3400. What is that? What should be added to a number? Which number? Which is given, that is 1672. We have 1672. Okay, ये तो हमारे पास में है, but we have to add something here. What should be added? Added. क्या add करोगे? What should you add here to get 3400? इस नंबर में कौन सा नंबर प्लस करोगे तो 3400 आएगा। सिंपल है हिंदी भाषा में, ठीक है। लेट्स सी वंस अगेन, व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड टू 1672। इस नंबर में व्हाट यू विल ऐड सो दैट द सम इज, सो वी गेट 3400। सो हियर वी विल डू द सेम. What we have to do? We will subtract the smaller number from bigger number. ठीक है, हम लोग यहाँ करेंगे subtraction. What we have to do? क्या निकालेंगे? Subtraction कर देंगे. We will find the difference, and that will be the answer. Understood? So in this case, we have to subtract. So 3400 minus 1672. Again 3400 have the 2 zeros at the last. इसमें से ये सब्सट्रैक्ट नहीं होगा, इसमें से ये भी नहीं होगा. टेक अ बोरो फ्रॉम नियरेस्ट टू द नियरेस्ट, बाजू वाले के भी बाजू वाले से. सो 4 becomes 3, this becomes 10, 10 becomes 9 and this becomes 10. समझे? 4 becomes 3 and it given to the 10th place, so this becomes 10. अब ये 10 बाजू वाले को देगा, that means this will give to the 1st place, so 10 will cut and 9 will remaining and this becomes 10. So 10 minus 2 is 8, 9 minus 7, 2, 3 minus 6, not possible. Take borrow, here will be 2, here will be 30, so here will be 7 and here will be 1. Okay, the answer is 1728. So what will be the answer? We will write here, final answer, 1728 will be added to 1672, that is 1672 to get what we have to get, 3400. 3400. Understand? Let's solve second one. And second one is, what we have to add, what should be added to 978 to get 9780. अब इस नंबर में कौन सा नंबर प्लस करोगे so that the answer becomes 9780. Again we have to subtract the smallest number from the biggest one and we will get the answer. Okay, ऐसा ही है same, and rest of the question 3 and 4 is your homework. Solve. Okay, so write down 9780 minus 978. Quickly subtract it. This becomes 10, this becomes 7. 10 minus 8 is 2, 7 minus 7 is 0, 7 minus 9, not possible. Take borrow, this becomes 8, this becomes 17. 17 minus 9 is 8 and this becomes 8. Okay, so that is your answer. So we will write final answer here. I am writing over here. Okay, 8802. You have to write the final answer. Okay, ये आंसर आपको लिखना है. Will be added to
किस में ऐड करेंगे? 978 में, 978 to get what we have to get, that was the final answer, that is 9780. 9780. Understand everyone? Okay. Quickly note down, and rest of the question is the homework. Solve it and send it into the group. Okay. And the exercise 2.6 have the 2 word problem and it will be complete. ठीक है? बहुत मैं आज या कल फटाफट से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करके आपको सेंड कर दूंगा एंड देन योर चैप्टर विल बी फिनिश्ड and then we will start our next chapter. Okay, so have a good day and bye bye. If you have any queries regarding any questions, so you can write in the comment box or you can send a message. Okay, and please complete your notebook and send for checking also. Have a good day and bye bye. Take care.